Rahim. Let's begin. So this is our first lecture about PMP certification. We will start with the business environment domain. Let me tell you about environment domain. It is about 8% of your exam. So the topics that we will be covering in this domain there will be almost 8% of your exam questions will come from this domain. Okay. This is a foundation about PMP, about project management, okay, in which we will cover basic things. What is a project? What is the concept of business value? Why we do projects? How project is linked with the organization strategy, and in which environment we do the projects? What are the influences of the environment on the projects, and what are the influences of the projects on the environment? And how we build the governance around a project, and what are the compliance requirements for a project. Okay, so let's begin our journey. What is a project? PMI defines project as a temporary endeavor which is undertaken to create unique product, service, or a result. So you can consider it as a group of tasks that you will be doing for a time boxed duration, and with the objective to either create a new product, or you are starting a new service, or you are behind in an operational improvement or some result that you want to achieve. So this gives us the indication that project have few characteristics. So number one characteristics that comes out is that since project is done for a shorter duration or maybe longer duration, but a fixed, I would say uh, there is a definite duration, that there is a start date and there is an end date. So it means that it's a temporary endeavor. It is not going to be an a continuous set of activities. Okay, it gonna start one day and it's gonna finish one day. So that means it's temporary. Secondly, second characteristics that comes out is that the product that we deliver gonna be unique. We cannot say that we are producing copies and copies and copies of the same product and it is unique. It's a project. No, the moment we are copy pasting one design and producing products after product, that's no more a project. Project was there when you were creating this product for the first time. So you designed it for the first time. You faced a lot of challenges, a lot of new kind of work that you faced for the first time. That was unique. You dealt with a lot of new stakeholders, let's say. You dealt with a lot of risks. You managed a lot of challenges, assumptions. Okay. So that all things were unique. Okay, so the moment you are done, you have produced the product and it is released to the hands of operations team to either use it, or manufacturing team to take this design and make multiple copies of it, then it will become part of regular operations. So as long as there is change, you are doing a project. So this is what we say, that projects are catalyst for change as well. So first thing, temporary. Second thing, creates a unique product or service. Third thing is it drives change. It's a catalyst for change. So we'll bring change through projects only. Fourth thing is that benefit. It will bring some value for the organization. So see, take an example of a project that you launched a mobile app.
okay, or you are in a service industry, or you just created an innovative app and people will download it, company will get more revenue out of it, okay, so value will be created for the company. So it's a unique app in the market. You have done a lot of effort to bring it in the market, okay, and definitely it will be a unique experience and it will be a changed experience for the people who will be downloading it, although the Yes. similar kind of products would be there in the market, but this will be some change. And once we sell it, we will make money out of it, or we will have better uh, brand recognition in terms of. So this gives us the concept of a business value, which is coming next. That means that Yes. either it will enhance our goodwill, our brand image, or it will have an impact, financial impact on our numbers, figures, revenue, margins. So that's the concept of business value we will be dealing with. Okay. Now, project success depends on what? Project success depends on various factors. Okay. So if you are Okay. doing a project in a mature organization where the processes are in place, project managers are empowered, uh, from top to down, you have a project oriented culture, let's say. So your organization is very mature in project management. So project success will be, chances of success in project will increase. Okay. Yes. Okay. Yes. So other things are related to project manager own interpersonal skills. So the more you are um, good in working with people, the way you communicate with the people, your interpersonal skills, this helps in driving the project towards success. Okay. And definitely the stability of the organization in terms of funding, funding should continue for the rest of the project. So definitely we need funding to be there always once we are doing the project, and it the success also depends on people because projects are done by people. Okay, Yes. so their skill set, your team, their the resources that you have. Okay, it makes a lot of difference. So the more skilled resources you have, the better chances are that you're gonna succeed. Mhm. Yes. Plus, you need to create a collaboration culture. You will collaborate with stakeholders, you will collaborate with your team members, and this is important value that you need to understand yourself and you need to keep it near to you and near to your team, that collaboration is the key for the success of a Yes. project. Then you need to understand what are kind of risks that you may involve, and you need to collaborate to resolve those conflicts, risks that you may see. So all those impediments, problems that you face, you have to provide your leadership uh, responsibility, your leadership to resolve those conflicts and issues. So Okay. now we have now talked about examples. So examples of the projects you can take about any new gadget you launch, any new application, mobile application that you launch. It can be any organizational change that you want to achieve, any new system that you are bringing to the organization, such as for your customer relationship management, your enterprise resource planning, Okay. and so on. And examples could be in the infrastructure industry. So any construction of a bridge, building, house,
commercial, park, mosque, anything. These could be taken as a project. Then you talk about social responsibility projects, such as if you are conducting an awareness campaign, that could be a project. If you are conducting a beach cleanup exercise, that could be a project. If you are conducting the awareness campaign for, let's say, a vaccine or for child education, anything, fundraising, that could be a project. And there could be some environmental projects also that are a study undertaken to protect the ozone layer could be a project, and so on. Many innovative projects are there for governments to companies when they have contract between them. Part of the scope of the work that I will outsource to other company, so I'll make a project with them. So let's say I'm working on a bigger construction project and I don't know some part of the scope which I'm not specialized in. So I will make a contract with another company which is specialized in. So if I'm going to undergo a contractual relationship, I need to start a project. That contract will start one day, end one day, and I will have some scope with that company that they need to finish within the specified time, within the specified budget. So that could be a project. So these many examples we can take up for the project. If you have any question around a project, what it is, how we can become successful in a project, and what are the examples of the project, you may ask. No, sir. Hmm? No, you can go ahead. I would like to make this in our own language in Urdu also, so that the people will understand later on as well. तो हमने क्या बातें की, हमने कहा कि प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी ग्रुप ऑफ टास्क होता है, ठीक है, बिल्कुल। और वो हम्म, एक टाइम बॉक्स ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, जिसमें एक स्टार्ट डेट होती है सारे कामों की और एक एंड डेट होती है। इसी के अंदर बिल्कुल। हमने एक मकसद अचीव करना है। वो मकसद क्या है कि हमने कोई एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, या कोई नई हम्म, सर्विस स्टार्ट करनी है, या कोई हमने रिजल्ट अचीव करना है, जो कि एक ऑपरेशनल रिजल्ट भी हो सकता है। कि लेट्स से कि पहले हम सर्विस दे रहे थे पिज़्ज़ा डिलीवरी की 30 मिनट में, अब हम चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट से ऐसी इन्हांसमेंट्स लेके आएँ अपने वर्कफ्लो में कि हम 15 मिनट में सर्विस डिलीवर कर सकें। तो वो भी एक प्रोजेक्ट हो सही है। सकता है। और बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो जब आप करते हैं तो यू मस्ट सी अ चेंज। अगर आपको चेंज नज़र नहीं आया, ठीक है, कि पहले भी आप 30 मिनट ही ले रहे थे अपनी सर्विस डिलीवरी में और प्रोजेक्ट किया भी आपने, लेकिन आज भी आप 30 मिनट ही ले रहे हो सर्विस डिलीवरी में, तो इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट ने कोई चेंज नहीं इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट का पर्पस यही है कि यू विल हैव अ चेंज डिलीवर्ड थ्रू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई भी आप नया सिस्टम लेके आते हो, पेरोल प्रोसेसिंग का सिस्टम ले आते हो, तो जो ठीक पेरोल है। प्रोसेसिंग का सिस्टम है, वो पहले जो गलतियां हुआ करती थी, ह्यूमन मिस्टेक्स हुआ करती थी, वो अब नहीं होनी चाहिए, लेट्स से। इसलिए अगर आप लेके आए थे, तो अब नए सिस्टम में वो नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज अ चेंज दैट वी आर लुकिंग। फिर हमने बात की कि प्रोजेक्ट की एग्जांपल्स क्या होती हैं, तो हमने कहा कि सो मैनी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोई नई डिवाइस मार्केट में आती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी किस्म की भी, और नई, और उसके अलावा हम कोई एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सोशल कैंपेन्स की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्ट्स की, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किए जाते हैं, और इनका एक पर्पस होता है। और प्रोजेक्ट की सक्सेस डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैच्योर है, प्रोजेक्ट मैनेजर कितना कॉम्पिटेंट है इन कम्युनिकेशन, इन इंटरपर्सनल स्किल्स, प्लस ऑर्गेनाइजेशन कितनी तगड़ी है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, और टीम मेंबर्स कितने स्किल्ड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल सेट, जो कि चाहिए होगा हमें प्रोजेक्ट को सक्सीड करने के लिए।
प्लस आपको कुछ वैल्यूज लेके चलनी पड़ेंगी सच एज कोलेबोरेशन, कम्युनिकेशन, एंड प्लस you have to understand the problem, your problem resolving skills, your conflict management skills. These will be quite handy. ठीक है, चलो. So what is project management? Can you guess in your own words? Project management means how you manage the project So if you are if you are given responsibility some sort. I'm giving examples such like that. Before I was working as means that we they gave us a project such like that. We have to control all the there is a building. We have to control all the LPG system, that is liquefied petroleum gas. We have to control all these things. This is related to the fire protection, so we have to know each and everything. We have to manage the things. If there is any fire alarm, how we manage that one. Is it certain processes like that? Management. true, true, How we manage any project. yeah, true. So when we talk about project management, so PMI defines it as the application of the knowledge, skills, tools, and techniques to the activities of the project to meet the project requirements or achieve the project goals. So we are talking about the knowledge that we are going to learn during this course that is brought to you by PMI, and certain skills, soft skills, hard skills, project management skills that we will be talking about. Let's say we talked about project managers, interpersonal skills. So that could be one of the skill, and then tools. So tools and techniques are related to project management, such as how we brainstorm about the ideas. That could be one of the technique. How we benchmark other products or services. Mhm. So benchmarking Okay. could be one of the tool and technique. And we will be learning hundreds of tools and techniques during this course. So the way the when you apply that knowledge that you are going to get and the skills that you acquired over the period of time, such as communication and interpersonal skills, and you use the tools and techniques that you will learn about project management to the activities of your project while leading your project. You are doing the project management. Okay. Plus, when you are managing a project, you have a lot of competing constraints, such as Yes. manage scope, manage schedule, manage cost, manage resources. So, when you manage all these competing constraints, you are doing the project management. Okay. Okay. And PMI is a project management institute which was formed in 1969, and Okay. the PMP certification was introduced in 1984. Okay. And till date, we have our project management body of knowledge that is going on through its seventh edition. We have a seventh edition with us now. The project management body of knowledge, I will tell you, is a standard about project management. It's a guide that tells you all the best practices Okay. that you can use to succeed in your projects. So it's a group of uh, tools, techniques. It mentions knowledge that you need to know, and if you apply that, uh, the chances of success in your projects will increase. So project management body of knowledge is going through its seventh edition, Okay. and yeah, that's also one of our resource which we will be consulting. Okay, all right. So when we do projects, we have a project life cycle concept.
Okay. So project starts one day and project ends one day. So there is an initiation of a project and then there is a closing of a project. But in between, project is planned, project is executed, and project is monitored, controlled, and project is delivered in the end. Okay. So when it comes to planning based approach, okay, so we have a project where we need to plan in advance, let's say, and we can do that because the scope of the project is very clear, okay, and we can decide to start with. We can come up with an estimate about how much time it will require, about how much cost it will be. So that's a plan Okay. based approach. Okay. So let's say you are constructing a building. So it's very clear that you need a two-story building. So the design would be clear. And also you have done these kind of projects in the past. So you can estimate that how much material Mm. you need, how much equipment you need, how much manpower you need, and you can come up Yeah. with an estimate because it's not a rocket science, it's just a building construction that you are Mm. familiar. So, Yeah. if this is the scope of the project, you can estimate from the very beginning how much time is required and how much money is required. So, this is a plan based approach. And in this type of approach, key roles that we have are project sponsor, the person who authorizes the project, your customer, let's say, or it can be government, it can be external party, bank, anyone. And then you have a PM. You will appoint a PM, you will appoint a PM to lead the team to deliver the project objectives. So that will be your PM. And how Okay. we see the value in this type of approach, that we see the value mostly in long term at the end of the project, but we do see the value in the short term as well if we are following a phased approach. So let's say you're Okay. constructing a a, a complex in which you have a building, you have a park, you have a mosque. So if you are done with the uh, mosque, let's say, so you can say, okay, in the first phase, we delivered the mosque. In the second phase, we delivered the park. In the third phase, we delivered the residential complex. So that we can say we can see the value in phases. So we can see the value short term, that we saw the Okay. mosque, we saw the park, and we saw the residential building over the end. So this is how we Okay. say, okay, value can be realized both in short term and in long. So that's a plan-based approach. But the key about Okay. plant-based approach is if the scope is clear. If the scope is clear, you can estimate your cost, you can estimate your budget, your time, how much time it's gonna be. So the sponsor will come to you, Mr. Project Manager, I want to construct a building. Please estimate for me the time required and the cost required. So you will estimate Okay. and you will provide him with the estimate that it will gonna take 2 months, 2 years, and you're gonna tell him that it's gonna take $10,000 or $100,000. Okay. Then the project will start, and you will be appointed as a PM, let's say, and the sponsor will realize the value once you will deliver the first phase of the project or the full Big Bang delivery. So that's Okay. purely a plan-based approach. But we do not have projects where the scope of the work is very clear always. We do have Yes. projects when the scope of the work is not clear in the beginning. Don't you think? Yes. Yes. Right. Yeah. We have Yes. projects where the scope is little known in the beginning. So it's not possible for me as a PM to tell you as a if you're a customer that for something that is not very clear, I cannot estimate. I cannot estimate to the accuracy, okay, that it will Okay. take 10 days, it will take 100 days, it will take 1,000 days. I don't know Mm. because we don't know what we want to achieve. So once we Yes. don't know what we want to achieve, our scope is not clear, we cannot estimate. Mm. Although Yes. we can do the estimation to the extent we know what we want to achieve. So Okay. if I know little bit, I can estimate little bit. That would Mm. be for that particular
scope that I am clear with. So this is called Okay. a change-based approach. Unlike the plan-based approach, this is called the change-based approach. And in change-based approach, let's say uh, we will go through our project life cycle multiple times. So there will be Okay. repetition of initiation, planning, execution, monitoring, controlling, closing, and we will be doing for small iterations that we will be conducting. So Okay. this is a learning based approach. So we understood the scope, we planned it, we executed it, we delivered it. And then meanwhile, when we presented, we asked for the feedback. And when we got the feedback, we got to know about our design. If we are going in right direction, we will keep going for the next sprint. If we have been given the feedback that something has to be changed, then we will change our approach. So with the Okay. feedback loop, we are going to change our approach. So we are going to change our design. So that's called the change-based approach. And in change-based approach, for example, for the development of the product, we have various approaches such as agile, incremental, iterative, and so on, which we are going to look at. And in this type of approach, we do not have the PM. We call Scrum Master that we appoint in this type of role. Okay. So in this type Oh, of projects, we have a product owner, we have a project team, which can include the resources, and we have a scrum master, we may have a project lead, we have an what we call agile coach, and definitely the facilitation role will be done by the scrum master. So who is product owner? We will talk in detail, but product owner is a person who knows the business, the product. Okay. okay. So he is the customer representative, which will give you the requirements, the features that should go in the product. The project team Okay. comprises of, if it's a development team, then there will be programmers, developers, coders, testers, and so on. Scrum Master is a role that is synonymous to the PM, but this is more kind of a facilitation role. And Okay. Agile Coach, we will talk about it in detail, but Agile Coach talks about Agile values, what are Agile principles. They will train the team about Agile practices. Okay, we can see how value is delivered. So in this type of approach, value can be delivered iteratively or incrementally. Okay, Okay. so iteratively means that consider a picture, okay, and you are you are drawing a picture, and then every day you are adding more detail to that picture. Okay, so Okay. with the iteration by iteration, your picture details are becoming clear and clear what it is about, right? Yes. So that's an Yes. iterative that you draw it and then you add more details to it. Okay, and Okay. we have a concept of incremental delivery and uh, so we talked about single delivery earlier. Okay, then we will have an iterative approach that this Okay. will also require one time delivery, but more frequently you will be asking for the feedback in between uh, from your customers. Okay, so Okay. similarly in incremental, what you do, you divide the project scope into various smaller chunks and you develop those small chunks, and then you accumulate the previous delivery with the next one, and then you add on features after feature, and then you do the accumulation and you do the multiple deliveries. Okay, we'll talk about it and we'll see it in essence, what we are doing here is that what is different from the plan-based approach, we are asking for more frequent feedback from the customer. Unlike Okay. the above case, here we are asking more frequent feedback, and we are dividing the
big chunk of work into small iterations, and we are Yes. improving our product through these iterations. Yes. I hope these two kind of approaches are clear for you. Yes, clear for me, but it will the second approach will be cleared more if you relate it with any examples. So it Definitely, will be clear. definitely. Let's talk about a company which is launching a mobile app that will help you to book your parking spot. Okay. Okay. Now, this is one of the features that you know by now, and then you start building it. Okay. That will allow customer to book its parking spot. Okay. Okay. But the more you uh, work on this project, you got to know more requirements that the customer want the user of the app to be able to pay for its parking spot as well. Okay. So while you are working in one of the short sprint about one of the requirement and you were about to deliver it, you got to know that for the future sprint, you also need to Okay. add the payment option. Okay. Yes. Or let's say client also ask you to allow the reservation option also for the future. Okay. Okay. So all these features are actually coming not on the very first day. Customer Oh, is free to innovate. Customer is free to think what he want in his app, and you being the scrum master or the PM of the team, you have a team and you take the requirement feature by feature and you start delivering it, and you okay. keep the door open for the customer to think and innovate and bring more Oh, product knowledge to the product backlog. And then once you are done with small features, you will go back to the product backlog and look what you need to release next. no, got it. Okay. So in which way we deliver the value incrementally and we iteratively improve our product. Yes. Got to know, But right? can, Yeah. can Question. it be that the client, yes, you're right, means that in that case we are just open the door for the customer or for the client that he can add what he wants. But means that he cannot give all the data in a single time. देखो, जो पहली अप्रोच है प्लान बेस्ड अप्रोच है उसमें क्या है कि आप बीइंग अ कस्टमर जानते हो कि आपको क्या बनाना है। जो एंड गोल है ना प्रोजेक्ट का, वो बड़ा क्लियर है। Okay. प्रोजेक्ट का जो एंड गोल है वो आप भी इमेजिन कर सकते हो, कस्टमर भी पहले दिन इमेजिन कर सकता है कि यार ये 2 मंजिला बिल्डिंग होगी और हर बिल्डिंग पे एक फ्लैट होगा और उस फ्लैट में 2-2 कमरे होंगे और एक एक कोर्टयार्ड होगा। दैट्स इट। So yeah. ठीक है। 2-2 वॉशरूम होंगे हर फ्लोर पे। तो ये बड़ी Yes. क्लियर सी रिक्वायरमेंट है। तो इसको आप एस्टिमेट भी कर सकते हो और इसको आप एक फेज में डिलीवर भी कर सकते हो, सिंगल। So yeah. और आपको बार बार कस्टमर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। मतलब So yeah. पहले ही आप एक रिक्वायरमेंट फेज चलाओगे कस्टमर के साथ, रिक्वायरमेंट क्लियर क्लोज होगी, डिजाइन बनाओगे। डिजाइन के दौरान आप कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं लोगे, डिजाइन बना दिया, डिजाइन बन गया, उसके बाद अब आप रिक्वायरमेंट लोगे तो इसका मतलब है डिजाइन पे एफर्ट जाया हो जाएगी। तो आप डिजाइन पे एफर्ट जाया नहीं करना चाहते। तो आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट क्लोज कर दी, फेज क्लोज हो गया, महीना लगा कोई बात नहीं। फिर आपने डिजाइन फेज स्टार्ट किया। डिजाइन फेज में आपका लेट्स से महीना लग गया। आपने डिजाइन कंप्लीट किया, फिर आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट किया, आपने इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी। इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई, आपने जो है सर्वे विजिट और उनको हैंड ऑफ कर दिया, साइन ऑफ कर दिया, डिलीवर कर दिया। ठीक है। Mhm. यहाँ पे एक इशू है, वो ये कि आपने जब कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली थी, वो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट था। फिर आपकी डिजाइन हुआ, कंस्ट्रक्शन हुई, इंस्पेक्शन हुई, आपकी सारी साइन ऑफ्स हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब आप कस्टमर को आपने
विजिट कराया, दिखाया कस्टमर को, तो उसके दरमियान में ना बहुत बड़ा गैप था, कस्टमर के साथ आप इंटरेक्शन में नहीं थे। ठीक सही है, है। बेसिकली कस्टमर के लिए आपने रिक्वायरमेंट का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। सही है सर। ठीक है, तो समझ गया। प्लान बेस्ड अप्रोच में यही होता है कि आप अगर आपने शुरू में ही प्लान कर लिया है तो अब आप उसी प्लान को फॉलो करोगे, अगर कोई चेंज आएगा तो वो कॉस्टली होगा। ठीक है, ओके सर। कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी। सही ठीक है। है, ये होगी आपकी प्लान बेस्ड अप्रोच। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको रिक्वायरमेंट जो है, जो एंड गोल है, वो पहले दिन ही क्लियर नहीं होता कि हमारी एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर होंगे। लेकिन आपको सही है। स्टार्ट तो करना होता है, आपके ज़हन में एक तो मार्केट के लिहाज से कोई एक दो फीचर तो होते हैं कि आपने क्या लेके जाना है मार्केट में। तो आप ये कहते हैं कि सही है। बजाय इसके कि हम 6 महीने तक रिक्वायरमेंट ही गैदर करते रहें कस्टमर के साथ, ऐसा करते हैं कस्टमर के साथ हम डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। उससे बोलते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनाते हैं, इसके अंदर हम फीचर्स डाला करेंगे, आपके साथ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग रखेंगे और वो हम वी विल कंटिन्यू टू थिंक अबाउट इनोवेटिव फीचर्स। ठीक है, ओके। लेकिन हम ना साथ साथ स्टार्ट भी कर देंगे बनाना। सही है सर। तो हम क्या समझ गया। करेंगे कि उस बैकलॉग में से हम कुछ फीचर उठाएंगे और अपनी टीम को दे देंगे, हाँ भाई अब इसको सही है। बनाओ। वो उसको सही है। डेवलप करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, कस्टमर के पास ले आएंगे रिव्यू के लिए। ठीक है, 2 हफ्ते सही है। लगाएं, 1 महीना लगाएं, इससे ज्यादा हम उनको जो है टाइम नहीं देते। हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, वो हम एक आइट्रेशन चलाते हैं, एक फेज चलाते हैं, एक स्प्रिंट चलाते हैं, उसके वेरियस नाम्स हैं। ठीक है, उसमें सही फिर है। हम उसको क्या कहते हैं, कस्टमर को एक डेमो देते हैं कि भाई आपने जो एक फीचर सोचा था हमने बना दिया और देखो कैसा है, आप जिसको चला के देखो। कस्टमर अगर ओके करता है तो हम उसे रिलीज कर देते हैं मार्केट में। ठीक सही है। है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर बैकलॉग के पास आ जाते हैं, बैकलॉग में देखते हैं कस्टमर ने कुछ हो तो नहीं डाला, या कस्टमर सही से हमारी डिस्कशन तो चलती रहती है, तो हम फिर नया फीचर पकड़ लेते हैं और उसको डेवलप कर देते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। जब तक कस्टमर हमारी रिसोर्सेज को इंगेज रखेगा, कीप ऑन पेइंग अस, तो उसकी प्रोडक्ट इंप्रूव होती जाएगी, बढ़ बनती जाएगी। जब उसके सही पैसे है। खत्म, हम टीम को रिलीज करेंगे, प्रोडक्ट जितनी बन गई है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। सही है। समझ गया। आइडिया क्लियर हो गया ना? अभी क्लियर हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे हम काम करते हैं उसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं। हमें बेसिकली उनके पास हेल्प के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, सही। और उसमें एक डिपार्टमेंट होता है पीएमओ का डिपार्टमेंट। वो प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस भी कहलाता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस भी कहलाता है। ठीक सही है, है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो इसे अफोर्ड कर सकती हैं। एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है ना, हर हम्म। ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। क्यों? ये 2-3 तरह के रोल प्रोवाइड करता है। ये एक बंदा भी हो सकता है, ये एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो पीएमओ दो हम्म। तीन तरह के रोल्स प्रोवाइड करता है। अगर पीएमओ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, पीएमपी की, या किसी हम्म। और मेथोडोलॉजी की, किसी और फ्रेमवर्क की, सिर्फ ट्रेनिंग करवा रहा है, आपको बता रहा है कि कौन से टूल्स होते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, कैसे प्रोसेसेस होते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के, तो वो एक सपोर्टिव रोल प्रोवाइड कर रहा है। या वो आपको प्राइमवेरा की ट्रेनिंग दे रहा है, वो आपको प्लानिंग सॉफ्टवेयर की, एमएस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दे रहा है। तो बेसिकली वो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रेन कर रहा है, हाउ टू बी मोर कॉम्पिटेंट विद द टूल्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो वो सपोर्टिव रोल अदा कर रहा है। सही ठीक है। है, लेकिन अगर पीएमओ आपको कहता है कि ट्रेनिंग मैंने दे दी, अब मैं देखूंगा कि आप कितने प्रोसेसेस फॉलो करते हो, कितने टूल्स को यूज करते हो, आप हम्म। कितने कंप्लाइंट हो, जितना जोन सी भी मेथोडोलॉजी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चूज करी है, लेट्स से पीएमआई मेथोडोलॉजी चूज करी है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं। मैं आपको ऑडिट करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हो, क्या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हो, क्या आप रिस्क रजिस्टर बनाते हो,
तो मैं अगर आपके पीछे पीछे आपको मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो इसका मतलब है मैं कंट्रोलिंग रोल अदा करूँ। सही है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है डायरेक्टिव रोल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस या प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साइड बाय साइड प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल्स के बिहाइंड हो जाए, यानी कि पुश करना शुरू कर दे डिलीवरेबल्स को और टीम्स को टू गेट द प्रोजेक्ट डन, इफ दे रोल्स अप देयर स्लीव एंड दे शोल्डर बाय शोल्डर वर्क विद द प्रोजेक्ट मैनेजर्स and push the delivery of the project, then they become the directive PMs, like they become the directive PM. ओके। अब वो सिर्फ सपोर्टिव रोल नहीं दे रहे, along with that they are ensuring that compliance is there, plus they rolled up their sleeves and they work side by side with the PM to deliver the project. ओके। यहाँ उनकी वैल्यू ज्यादा ऐड हो रही है, यहाँ दे आर मोर स्ट्रेटेजिकली इन्फ्लुएंशियल, कि वो स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में अपना किरदार अदा कर। इसी सही तरह सर। ये हो गया आपका कन्वेंशनल सेटअप। लेकिन जो एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें इसी सेटअप का नाम चेंज कर दिया गया है, उसको कहते हैं एजाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, या उसे ओके। कहते हैं वैल्यू डिलीवरी ऑफिस। ठीक है। उसके अंदर भी सपोर्टिव रोल होते हैं, कोच होते हैं, एजाइल कोचेज होते हैं हमने सुना, और वो लोगों को एजाइल माइंडसेट की ट्रेनिंग देते हैं, एजाइल वैल्यूज की ट्रेनिंग देते हैं, एजाइल प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। और अबाउट दे मेंटर पीपल अबाउट वेरियस प्रोडक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, मिनिमल बिजनेस इंक्रीमेंट क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, और सो ऑन। दे टॉक अबाउट वेरियस इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। वो आपको बेसिकली एजुकेट करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका दो तरह के रोल्स जो पीएमओ ऑफिस प्रोवाइड करता है, एक कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन में, एक एजाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, ओपीएम। ओपीएम क्या है? ये एक सिस्टम है वैल्यू डिलीवरी का। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उसकी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है। बिल्कुल। अब उसके अंदर आप क्या करते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, पोर्टफोलियोज होंगे। अच्छा, ये जो सही। प्रोग्राम होता है ये क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है। ठीक है। सही। अगर प्रोजेक्ट्स एक कस्टमर के लिए किए जा रहे हैं लेट्स से, तो हम क्या करते हैं, उन्हें ग्रुप कर देते हैं। तो सही उन्हें है। ग्रुप करके एक प्रोग्राम मैनेजर बना देते हैं और पीएम्स उसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स एक प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं। ये मैंने एक सही। सिमिलैरिटी बताई कि वो एक कस्टमर के लिए किए जा रहे हैं तो हमने उन्हें एक प्रोग्राम बना दिया। लेकिन इसमें और भी सिमिलैरिटी हो सकती है, क्या पता वो एक कस्टमर के लिए ना किए जा रहे हो, लेकिन वो एक तरह के रिसोर्स स्किल सेट को यूज करें, एक रिसोर्स पूल को यूज करें। ठीक है। सही। सारे वो जो है वो मोबाइल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने उसको एक प्रोग्राम बना दिया। ठीक है। सही। तो उसके अंदर जो रिसोर्स पूल है उसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपर होगा, वेब एंड बैक एंड डेवलपर होगा, क्यूए टेस्टर, वो हमने एक रिसोर्स पूल बना दिया। तो वो जो है एक पूल है, और उस सिमिलर काइंड ऑफ रिसोर्सेज को जब हम यूज करते हैं तो हम एक प्रोग्राम मैनेजर अपॉइंट करते सही हैं। है। अच्छा, प्रोजेक्ट हो या प्रोग्राम हो, ये दोनों पार्ट होते हैं पोर्टफोलियो के। ठीक सही है। है। तो ग्रैंडफादर जो है वो पोर्टफोलियो हो गया, फादर जो हो गया वो प्रोग्राम हो गया, और जो चाइल्ड हो गए वो प्रोजेक्ट्स हो गए। हम्म। ये हिरार्की आपको समझ में आ रही होगी, दिख रही होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टली भी पोर्टफोलियो के अंडर हो। सही है। ठीक है। यानी किसी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, वो स्टैंड लोन प्रोजेक्ट है। ठीक है। ओके। और ऐसा भी है कि ऑपरेशंस भी आपके प्रोग्राम का पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। हमने सही है। कहा कि प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं हो सकते, प्रोजेक्ट जो है वो एक डेफिनेट टाइम के लिए होता है।
उसकी एक स्टार्ट डेट होती है, एंड डेट होती है, उसमें कोई ऑपरेशनल हम्म, एलिमेंट नहीं होता, लेकिन सही है। प्रोग्राम में हो सकता है और पोर्टफोलियो में हो सकता है। सही। ठीक है। तो आप जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है, उसको आप अचीव करने के लिए ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, पोर्टफोलियोज करते हो, तो ये जो एक सिस्टम बनता है, इसको हम कहते हैं सिस्टम फॉर वैल्यू डिलीवरी और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम्म, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। ठीक है। ओके। इसमें आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। और इस स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओपीएम। और ओपीएम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेच्योरिटी मॉडल, इसके बाद की एक चीज आती है, जो एक इंडिपेंडेंटली असेसमेंट बॉडी है, जो आपको असेस करती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेच्योरिटी किस लेवल का है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और वो देखते हैं कि जी आपके प्रोजेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं कि नहीं, प्रोग्राम्स वेल डिफाइंड हैं कि नहीं, पोर्टफोलियोज वेल डिफाइंड हैं कि नहीं, आप कितने मेच्योर हैं अपने प्रोसेसेस में, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स आप यूज कर रहे हैं। जितने आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेच्योर होंगे, वो आपको रेट कर देंगे। सही। ठीक है। अच्छा, हमने बात की प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, हमने लिटिल बिट बात की प्रोग्राम की, प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देखते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया, उसका काम है कि उसने प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल को अचीव करना है विद इन द टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी लेवल। राइट। ओके। और उसने अपने स्कोप को डिलीवर करना है, वो बिहाइंड द डिलीवरेबल्स है। वो कह रहा है सही। मैंने टाइमली कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को, या मैंने विद इन कॉस्ट अचीव करना है, या मैंने विद इन रिक्वायर्ड क्वालिटी लेवल अचीव करना है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हम्म, प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर के अंदर तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होते हैं। ठीक है। तो हमने कहा था कि प्रोग्राम तो कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स है। ठीक है। yes, इसका मतलब है कि प्रोग्राम मैनेजर का रोल जो है वो इंटरडिपेंडेंसीज रिजॉल्व करना है बिटवीन वेरियस प्रोजेक्ट्स। ठीक है। ओके। अब अगर एक कस्टमर के लिए मैं वेरियस प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, और कस्टमर कहता है कि जी इसको जो है प्रोजेक्ट को थोड़ा पीछे कर दो, दूसरे प्रोजेक्ट को मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, पुश फॉरवर्ड कर दो, तो प्रोग्राम मैनेजर क्या करेगा, वो रिसोर्सेज को मूव कर देगा। और वो पावर रखता है कि सही है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर से रिसोर्सेज ले ले और दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर को दे दे। अब सही है। अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपॉइंट होते ना, तो कोई भी अपने रिसोर्सेज ना देता, और हर बंदा अपने हम्म, प्रोजेक्ट को पुश करने की कोशिश करता। लेकिन हमने हम्म, प्रोग्राम मैनेजर लगा दिया। प्रोग्राम मैनेजर जो है वो रीप्रायोरिटाइजेशन का इख्तियार रखता है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। ठीक हो गया। प्रोग्राम सही। मैनेजर किस चीज के पीछे होता है? प्रोग्राम मैनेजर क्या डिलीवरेबल्स के पीछे होता है? नहीं, डिलीवरेबल्स के पीछे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। प्रोग्राम हम्म, मैनेजर बेसिकली आउटकम्स के पीछे होता है, बेनिफिट्स के पीछे होता है। उसका काम है बेनिफिट्स को ट्रैक करे। एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट देता हूँ कि आपने प्लान बनाया कि जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट है या सरहद डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो बच्चों की एजुकेशन का लेवल है वो 30-40% है, या 30% है। आपने स्कूल गोइंग एजुकेशन, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी जो परसेंटेज है, उसको बढ़ाना है 3 सालों में 60% पे लेके जाना, सही है। 30 से उठा के। अब आपने 3 सालों में 60 पे लेके जाना है, मतलब ये है कि हर साल लेट से आपको 10% मजीद बच्चे स्कूल भेजने हैं। बिल्कुल। इसके लिए आप लेट से वेरियस प्रोजेक्ट्स करते हो इस प्रोग्राम के अंदर। आपने आपको लेट से आपने 2, 4, 5 स्कूल नए बनाने हैं, 10 बनाने हैं, तो आपने 10 नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए स्कूलों के लिए। बिल्कुल। आपने इसके अंदर करिकुलम भी बनाना पड़ेगा, तो आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया करिकुलम डिवाइस करने के लिए। ठीक है। फिर आपने इसमें टीचर्स को हायर भी करना है, ट्रेन भी करना है, तो आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया ऑन बोर्डिंग टीचर्स। ठीक है। तो अब ये कितने प्रोजेक्ट्स हो गए बेताशा।
अब अगर क्या हो कि टीचर हायर हो गए, टीचर ट्रेन हो गए, कोई भी स्कूल नहीं बना, कोई भी करिकुलम डिवाइस नहीं हुआ, तो क्या साल के बाद आप कोई नया बच्चा स्कूल जा सकेगा? नहीं। नहीं जा सकेगा ना। नहीं। क्योंकि हर बंदा अपने प्रोजेक्ट को पुश कर रहा था और किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई एक दो स्कूल स्टार्ट करो, कुछ करिकुलम डिवाइस कर लो, कुछ टीचर हायर कर लो और स्कूल रनिंग करो, सही है। ताकि हमें वैल्यू नजर आ सके, बिल्कुल। ताकि नए बच्चे स्कूलों में जा सकें। तो क्या हुआ, प्रोग्राम मैनेजर हायर करने से ये फायदा हो गया कि अब वो टाइमली सारे प्रोजेक्ट्स को ऐसे लेकर चलेगा कि यार कोई मकसद भी तो अचीव होना चाहिए ना साल के बाद, कि हमारे पास कुछ टीचर हायर हुए भी हों, कुछ करिकुलम भी डिवाइस हुआ हो, और कुछ हमारे पास स्कूल भी खड़े हुए हों और नए बच्चे स्कूल दाखिल भी हो सकें। नॉट इट। ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो फिर कलेक्शन है प्रोजेक्ट्स का भी, प्रोग्राम्स का भी, और उसके अलावा कोई सब पोर्टफोलियो भी होता है उसका भी, और ऑपरेशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे होते हैं। ठीक है। इन दीज ऑल आर मैनेज्ड इन अ ग्रुप टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली देख रहा होता है कि व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू डू। वो जो व्हाट है ना, वो अपनी बेंचमार्किंग करके डिसाइड करते हैं कि एक मैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहा हूँ, एक मुल्क को लेके चल रहा हूँ। तो मैं मुल्क को लेके चल रहा हूँ तो मैं देखूं दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं। सही है। मैं एक कंपनी को लेके चल रहा हूँ, मैं देखूं दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं। तो हो सकता है मैं सही। बायस से इंस्पायरेशन लेके अपने प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स को चेंज ही कर दूं। हम्म। ठीक है। तो ये टॉप डाउन है, ये बताता है कि आपने करना क्या है, स्ट्रेटेजिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है। तो उस हिसाब से जो प्रोग्राम मैनेजर्स है ना, वो समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर से, और वो नीचे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं उनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, प्रायोरिटाइजेशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो सही कनेक्ट होते हैं बिटवीन दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड दी प्रोजेक्ट मैनेजर्स। है। हाँ, सही है। समझ गए इस लिंकेज को? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है। पोर्टफोलियो का सर थोड़ा बहुत अगर हाँ, तो एग्जांपल दे दें। पोर्टफोलियो लेवल पे आप देखो ना, एक सीटीओ होता है, एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। उसके पास ठीक है। बेसिकली वेरियस प्रोग्राम्स हैं, उसके पास वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं, सर्विस डिलीवरी, सर्विस एश्योरेंस ऑपरेशंस। ठीक है। और उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। और ये सारे वो देख रहा है, किस लिए देख रहा है? फॉर एग्जांपल, वो देख रहा है कि जी उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि हमने नंबर वन सर्विस प्रोवाइडर बनना है। ठीक है। सही है। किस चीज में? हमने टेलीकॉम या फाइबर प्रोवाइड करते हैं, फाइबर टू दी होम प्रोवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ का जो है ना, 5 सालों में, 2 सालों में हमने नंबर वन फाइबर सर्विस प्रोवाइडर बनना है इस रीजन का आने के बाद। ठीक है। तो फिर हम्म। उस पोर्टफोलियो मैनेजर ने वेरियस अपनी एक्सपेंशंस करनी है, अपनी रिटेल फ्रेंचाइजेस बढ़ानी है, अपने कोलेबरेशंस बढ़ानी है दूसरे नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ। किसी जगह पे किसी दूसरे नेटवर्क ऑपरेटर का आपको नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली वेरियस अपनी ब्रेथ एंड रीच बढ़ानी है। तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर देने हैं, नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करनी है। कैसे ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि हम हमारे लेट से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं विद इन द पीरियड ऑफ 5 years? हम्म। उसके लिए तो आपको अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी ना, अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको उस लेवल पे जाकर के सर्विस देनी पड़ेगी, और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि आप इतने लोगों को सर्व कर सको इंटरनली। बिल्कुल। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर कर रहा होता है, वेरियस प्रोजेक्ट्स इंटरनली देख रहा होता है, एक्सटर्नली देख रहा होता है। ठीक ठीक है। है। और अपने दैट प्रोजेक्ट को अलाइंस। हाँ। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के साथ भी कंपेयर करता है इसका। हाँ, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन कर रहा होता है बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ। सही अब है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा कोई तिनका भी उठा के इधर से उधर रखता है ना, अगर वो किसी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, किसी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, किसी ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, वो काम हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब है उसमें पैसा लग रहा है और खाम खा ऑर्गेनाइजेशन का पैसा जाया हो रहा है। सो एक्चुअली हम्म। वट एवर शुड हैपन, इट शुड हैपन स्ट्रेटेजिकली। या वो किसी प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहिए वो टास्क, या किसी प्रोग्राम का, या किसी ऑपरेशन का। बिल्कुल। तो ये जो लिंकेज है ना, आप और मैं जो काम कर रहे हैं, इट शुड बी लिंक्ड विद सम
operation, either or a project Okay. or a portfolio. It should be part of the organizational strategy. At the end of the day, everyone should contribute towards achieving what organization want to achieve. ट्रू हो Okay. गया? Okay. ठीक है. आई थिंक कि हमें इधर थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए. ठीक है. Yes. तो सो दैट आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सको. ठीक है. We So, can start later on today, tomorrow. Definitely, we will be doing it. ठीक है. So, any questions for these topics that we covered today? I will revise these topics once again, and if there's any question before lecture, I will ask from you. Good, good. So, let me do one quick summary for you so that you should refer to it. So, we talked about a project. Project is temporary. Project is a catalyst for change. Project produces a unique product, service, or a result. And there are various factors for the success of the project, such as project manager maturity, project management, organizational maturity. The more strong your sponsor is, the more skilled your resources are, the way you collaborate, and so on. We talked about Project Management Institute. It was founded in 1969. Then we talked about Project Management Professional Certification that was started in 1984. We talked about what is project management. It is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to the activities of the project to meet the project requirements. Yes. Then we talked about plan-based approach of project management, in which we said that there will be a role of a project manager and a project sponsor, and in which the value can be realized in a short term as well Yes. as the long term. But the key here is that we know the scope of the project and we can estimate on the day one how much cost it will be required and how much time it will be required. This is for the projects where the scope of the project is very clear in the beginning. Then we take the plan-based approach of project management. If we see the change-based approach require it is applicable for the projects where the end goal is not clear on the day one. So what we Yes. do, we brainstorm, we try to identify the scope, and the more the scope is, we plan for the scope that is visible, that is understood, and then we do small iterations and we deliver the product. So we deliver iteratively and incrementally. And in Yes. this kind of role, we have the role players such as product owner who knows the product, and we have the scrum master who facilitates the team, and we have the project team that delivers. Yes. Okay, we talked about the PMO structure in the organization that can provide you supportive role, that can provide you controlling role, or that can provide you directive role. And the same construct is available in the agile organizations where we call it agile center of excellence or value delivery office. We talked about organizational project management maturity or strategy execution framework, and we talked about that organization does projects, programs, portfolios, and operations in order to achieve its strategy. And the whole system of value delivery is called organizational project management. We talked about project manager or project management is about delivering the project objectives within the time, within the scope, within the cost. We talked about project manager is behind the delivery of the project deliverables. Program manager is behind the delivery of the benefits for the program, and portfolio manager aligns the business, uh, everything that is happens in the organization with the business objectives. Yes. Okay, that's all for today, and I'll see you in the next class. Until next time, have a great time. Thank you. Okay, bye bye. Thank you so much.